So good afternoon students, we are doing the question and answers of the poem Voice of the Rain. The first question is, there are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? The answer is, if the picture quality of the video is not good, please listen to as I am dictating and note them down in your copies. The answer is, one of the voices belongs to the poet. The other one belongs to the rain. The following lines indicate this. First line is, and who art thou, said I. तो ये किसने कहा है? पोएट ने कहा है. एंड सेकेंड इज, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. तो दो जनों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वार्तालाप है वो स्टार्ट हुआ रेन और पोएट के बीच में. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, देर आर टू वॉइसेज इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू? द फर्स्ट बिलोंग्स टू द पोएट एंड सेकेंड वन टू द रेन. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? क्या मतलब होता है फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल का? तो द आंसर इज, द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट द पोएट वॉज फिल्ड विद वंडर when he heard the voice of the rain answering his questions. And of course it is very strange कि आपको रेन आंसर कर रही है, तो इसीलिए उसने जो वर्ड यूज़ करा है स्ट्रेंज टू टेल. फिर उसके अंदर बात जो क्वेश्चन थर्ड है उसके अंदर पूछा गया है, देयर इज़ अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. कौन से वर्ड से हमें पता चल रहा है कि रेन और म्यूज़िक को यहाँ पे जो है उनके बीच में वो उनको पैरेलल लाइंस उनके बीच में उनको कहीं ना कहीं सिमिलर बताया गया है, उनके बीच में क्या समानताएं बताई गई है. सो द आंसर इज़, the last two bracketed lines indicates the similarity between rain and music. Just as music of song rises from the heart of a poet, so also the rain rises from the land and the sea. Again, after the poet has sung his song, it settles back into his heart. So also the rain, after falling on the earth, goes into its birthplace. The song keeps the poet's heart pure and happy, and rain keeps everything clean and alive. तो इस तरह से एक सॉन्ग के अंदर और रेन के अंदर जो है समानताएं बताई गई है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, कंपेयर इट विद वॉट यू हैव लर्नड इन साइंस. हमें कंपेयर करना है वाटर साइकिल के अंदर और हमारी पोएम के अंदर क्या बताया गया है. सो द आंसर इज, the cyclic movement of rain as described in the poem is scientifically correct. The water of the sea and land evaporates and rises towards the sky. There it is cooled down into water drops which fall to the earth in the form of rain. The poem brings out this cyclic movement of rain very correctly. Question fifth is, why are the last two lines put within brackets? And the answer is, the last two lines of the poem are not a part of the rain's speech. They are a comment of the poet on the rain. In these lines, the poet has drawn a parallel between the rain and music. Both rise from the inner birthplaces and return to them after fulfilling their mission. क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज, लिस्ट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स फाउंड इन द पोएम. क्या क्या ऑपोजिट्स इस पोएम के अंदर दिए गए हैं? तो द ऑपोजिट्स आर लैंड, सी, सेम, चेंज्ड, विद, विदाउट, डे, नाइट, रेक्ट, अनरेक्ट, इन एंड आउट. नोटिस द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न्स. एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शवर. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. Eternal I rise, for the song duly with love returns. Now we have to write the above sentences in prose form. तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसका आंसर होगा, the poet asked the soft falling shower of rain who she was. The rain expressed in its voice and said that she was the poem of the earth. Third answer is, the water vapors in the form of rain rise constantly out of the land and the bottomless sea forever. Question fourth is, the rain, the music and the song of the earth come back to her place of origin, the earth,
The song of the earth returns with love after completing its course, whether someone hears it or not. Then is the third part. Look for some more poems on rain and see how this one is different from them. The answer is there are many poems on rain, but the voice of rain is unique rain poem as it presents a dialogue between the poet and the rain itself. So with this we have done the question answers of the poem. The Voice of the Rain by Walt Whitman. So have a good day all of you.